हिंदू हाई कोर्ट ने हमारे यहाँ तो बोल ही दिया, जो पहले 1 सितंबर को बोल दिया, अब 30 सितंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, 40 सितंबर। और जिस हिसाब से कोविड चल रहा है, अब वो कह रहे हैं टेस्ट ज्यादा बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, तो चीजें तो भी आगे फर्दर बढ़ जाएंगी। तो जब चीजें बढ़ जाएंगी तो एंड ऑफ द डे मुझे ये लग रहा है कि इसकी डेट भी बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये ठीक, भाई मैं तो बता रहा हूँ, तो दवाई नहीं आई ना मेरे भाई, तो हर चीज बढ़ जाएगी, तो मान के चलिए। बिल्कुल ठीक है। और जब अगर ये डेट बढ़ जाएगी, तो आज मैं हिसाब लगा रहा था कि लोग जो अगर दिसंबर में तो पेपर हुए हाइपोथेटिकली, तो दिसंबर तक आप ये मान के चलना कि जब रिजल्ट आएगा दैट विल कम ओनली इन, फिर फरवरी में आएगा, जनवरी जगह फरवरी में आएगा। व्हेन रिजल्ट फरवरी में आएगा, तो आप ये मान के चलो फिर मार्च में लोग मेंबर बनेंगे नहीं। मैं आज ये कैलकुलेशन भी लगा रहा था मोटा मोटा। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर एक पॉइंट ये भी है ना कि अब रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। एक अटेम्प्ट मिस हुआ बीच में। नहीं, ऐसा नहीं भाई, रिजल्ट आएगा ठीक है, लेकिन क्या होता है, मेरा मानना तो डिफरेंट है ना। मेरे को तो मेंबर्स कौन बन रहे हैं उस पे है 21 से पहले। नहीं ना, वो मेंबर इस साल भी मेंबर नहीं बनेंगे, चक्कर ये है। एनीहाउ, लेट अस स्टार्ट द सेशन। ऑलरेडी 2 बज गए मेरे भाई, और यूट्यूब ऑन हो चुका है। बाकी लोग मेंबर बढ़ते रहेंगे, इसकी चिंता ना करिए यार, लोग अपने आप ही 2-15 पे काफी ठीक ठाक आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So this is the last in series of our assorted series. उसके बाद 1 सितंबर या 2 सितंबर के बाद नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। और we are grateful that Rachit has accepted our invitation for speaking on this wonderful. To be very frank, take my words, sir. ये पहला ऐसा सेक्शन है जिसने इनकम टैक्स पढ़ने का कुछ ना कुछ नजरिया चेंज करेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट आई बिलीव, जो चीज लेके आए हैं 6(1)A सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट हुई है, जहाँ पे हम क्या बोलते थे कि देयर विल बी, आज की डेट में हम नॉर्मली जब भी मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन बोलता था, दो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि इंडिया में भी सिटीजन बेस्ड टैक्स है, बट विद अ लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे मैं 912, 913 जहाँ पे आप बात करते हो, जहाँ पे सिटीजन अगर आउट ऑफ इंडिया काम करता है तो उस पर भी टैक्स लगता था, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करता था। और देन देयर वाज सिटीजन एक्सेप्शन आल्सो। अभी 6 में 2 जगह सिटीजन वर्ड ऑलरेडी था, पर अब 6(1)A के आने पर, 6 की अमेंडमेंट होने के बाद, टेक माय वर्ड्स, थिंग्स हैज बीन बिकम मच मोर डिफरेंट। पढ़ने का ढंग, हर चीज काम करने का ढंग। अब गॉन आर द डेज जब लोग बोलेंगे मैं नॉन रेजिडेंट अपनी रेजिडेंटशिप को प्लान कर लूंगा, तो प्लान कैसे करेंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, वो कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, सारी बातों का आंसर रचित भैया देंगे। और टेक माय वर्ड्स, रचित is very fine speaker, or he is a well known face in Chandigarh. He's actually a executive member also in Chandigarh branch, but the branch एक अलग एक पेडेस्टल है, but otherwise he's a wonderful speaker. And over to you Rachit, और टेक अस टू जो इश्यूज आया है सेक्शन 6 के आसपास, तो वहां तक हमें लेके जाए। थैंक यू भैया। Thank you, Nitin Bhaiya, for giving me this opportunity. I'm very appreciate your hard work you're doing in this field of enlightening people in these hard times of COVID, that we are not able to do face-to-face seminars, but you have given us a platform, this knowledge series. I have been your regular admirer, and I am keep admiring you and learning from you. All these new topics you're doing is great work for our fraternity. So, like Nitinji said, that this Income Tax Act has been totally revamped by introducing couple of sections, especially in the residential status. Residential status is like a mother residential status. Section 6 and Section 5 scope of income and taxability, chargeability are the mother of all this Income Tax Act. And they have introduced new sections, changed the very basic of the act, from the residential counting number of days to they have become to deemed residency based on the citizenship, which is a new thing they have introduced. I will try to share my knowledge, and in the meanwhile we'll like to have some inputs from Nitinji so that we can together have some better insights on this section. So taking forward, I share my slide. Hanji, is my slide visible, Nitin ji? Visible. ठीक है जी. So today I will try to basically touch upon couple of areas. These will be the areas today which we will be doing.
So we can have probably a question answer session also. Nitin ji, is it allowed? Or we can have इधर अलाउड है, individual? एकदम अलाउड है भैया, एकदम अलाउड है. इनिशियली भैया लोग चैट क्वेश्चन Q&A सेक्शन में लिख देंगे और उसके बाद अगर हैंड रेज करेगा तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली आल्सो टू यू आल्सो. Fine ji. So basically theory part we have all studied. हम काफी टाइम से थ्योरी पे कर चुके हैं कि व्हाट न्यू सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस, सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेजिडेंसी, प्लस देयर इज अनदर सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 they have introduced another section R plus NOR. They have definition and scope of R plus NOR, they have increased slightly, touching the basics. Then we will straight away goes to, I have considered we will take more time on this section 6 case studies, so that we have, as I feel, I understand better from the situational cases. We will take few cases of India and UK, and then India and UAE, and we will also try to see how we can have a taxability under DTAA and how a tiebreaker rule will be made applicable. I will try if we can cover all these areas. So moving ahead, general basic uh, introduction. I will let's move ahead from introduction. So what is the residential status, Nitinji? Residential status is initially had only two parts, resident and non-resident, which covered a resident covered ordinary resident and also not an ordinary resident. So if we take it forward, what was a resident? A resident was a person staying in India in a previous financial year or a preceding or a previous year for a days 182 days or more, or he could also have a period of stay of 60 days in that financial year, plus he should have stayed 365 days or more in last preceding 4 immediately preceding previous years. So this person can be considered as a resident of India, provided he is also the citizen as well as the person of Indian origin, or either or. These will be the persons considered as resident. So they had few exceptions or explanation to this section also. We call it exceptions, and otherwise these are explanations. A few persons will not be considered for a 60 days time period. They are namely Indian citizen who leaves India. Mark my words, it's only Indian citizen and it's not a person of Indian origin. This is a drafting excellence of the act. I would like to ask if anybody can explain. Let me frame my question after completing my sentence. That Indian citizen who leaves India for a previous year for a purpose of employment, or maybe or an crew as a member of crew of Indian ship, then this 60 days will be reconstituted as 182 days. It means instead of taking the B option which we had here in this clause, 60 days will not be counted, only 182 days. If he stays more than in 182 days in India, he shall be considered as resident. It is a kind of exemption or a benefit given to people going abroad for employment or on Indian ship as a crew member. So this is a safeguard for all the seafarers who working on Indian ship. There were proposed amendment to this section also, which when the act came, this amendment was dropped. Further, there is another part to it, the last part, third part, which is the Indian citizen or a person of Indian origin. There now they have introduced a person of Indian origin who visits India during the previous year. For him also, the period of 60 days will not be considered, it will be 182 days. So my question here is, why specifically in this third part only a person of Indian origin is considered, and which is not there in the above two clauses? Anybody on this point? My hint to this is that mostly all Indian citizens are person of Indian origin, but there can be few persons who go to Canada, but they are person of Indian origin, but take the citizenship of Canadian citizenship or US citizenship, and they are no longer the Indian citizen. So only a person who is an Indian origin but no longer a
Indian citizen may visit India. Here, see, above two clauses are the person leaves India, leaving India for employment or leaving India for Indian cruise ship. But this is the only case they're talking about visit. Visit, just see, visit they are referring. Visit to India. Visit can be done by only who is likely to come India. Will there be any foreigner who's born and brought up abroad and he has a foreign blood will like to visit India for visiting his parents or for work or for his dream to come back and settle back to India? No. Ideally, a person of Indian origin might have no longer been a citizen of India would be visiting India. So they have specifically mentioned here person of Indian origin. People sometimes tend to ask what is the reason. This is the reason why only this place person of Indian origin is considered. So let's move ahead. Any doubts over here? So we can straight away go towards the main topic. In between, so another there is a section 6 subclause 6 also, which says who is ordinary resident. Nitin ji, are you there? 6 भी देख रहा हूँ और सबको देख रहा हूँ भैया. हाँ जी, हाँ जी. तो थोड़ा बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि कोई सुन रहा है. So this is the ordinary resident case. Who is ordinary resident? One who first becomes a resident. Then there is option for him to be either resident, ordinary resident, or a NOR. So who becomes a OR, ordinary resident, if he has been a resident of India in preceding 2 financial years out of the 10 preceding previous years, immediately to the financial year in which we are considering his residential status. Or if he has been in India for a period of stay of more than 730 days in the last preceding 7 immediate previous years, then he becomes a OR. Otherwise, if these conditions are not satisfied, any one of these two, he becomes a NOR. Okay. So now the amendment comes. Now section 6 subclause 6 has an amendment, a very important amendment. The definition, the scope of this section has been increased. Besides just these two people who become, now they are talking about NOR. Who's NOR? Like I just said, the reverse of the same. The 9 out of 10 previous year, he should have been an NRI, or his stay in India should have been less than 729 days, more or less, 729 days or less during the 7 previous preceding years. Then he becomes a N resident plus not an ordinary resident. Further, the amendment from Finance Act 2020 comes now, which says that a person of Indian citizen, now see again they are referring to a person of Indian origin. Why they are saying a person of Indian origin? Because they are now somebody coming back to India or visiting India. Indian origin or a person of Indian citizenship having total income more than 15 lakhs, visits India, comes back to India, will be considered as a person resident plus and not an ordinary resident. Or further, but he need to stay a period of at least 120 days in India. Now, the period which was initially 182 days has been amended to 182 days, especially for HNI people. They consider a person above 15 lakhs of INR in one financial year is HNI. For them, 182 days shall not be considered as the period of stay for them any time above 120 days. So now what will happen? I just take a case study on this. What will happen? Besides this, they have also introduced a deemed residency. What deemed residency says? Any person who is not a resident of any other country, because of domicile, or maybe because of his period of stay, or maybe because of several other reasons, he avoided his residential status in some other country. Now shall be deemed to be resident of India if his income is exceeding 15 lakhs rupees. So what they have done is they have changed the basic structure of our residential status.
which was based on number of days of stay, has now come to. So now we have to understand what are the impacts of this. What is a deemed residency? An individual who is a citizen of India. See how well drafted again. When they are talking about an Indian citizen visiting back to India and staying more than 120 days with an income of 15 lakhs, there they have said, please mark clearly person of Indian origin as well, because there are high chances a person had been previously born in India, person of Indian origin, but somehow is no longer citizen of India, is coming back to India for staying more than 122 and staying in between 120 to 182 days will be now not an ordinary resident. But where they have said the deemed residency, there is no need of staying in India for even single day. So there is no point of being a person of Indian origin. Then it would have been a very hardship to all the people. Now only a citizen of India. If so, this clause, very basic clause, is a red alarm for people staying abroad and due to love of their country, and they are maintaining their Indian citizenship status. Now this is high time, probably not a good remark to send abroad to NRIs. They will choose to change their citizenship from Indian citizenship to the respective country in which they are staying. Otherwise, they will be clubbed in this clause if they are having an income from Indian source. Indian source. What is an Indian source? Any income other than the foreign income should be above 15 lakhs. What cases will be covered here? Let's see. Let's have an example. What difference does it make? Scope of income pe we come again. What incomes are covered under foreign income? Income other than foreign income. Any income rental. A person likes. Let's assume a person is staying in UAE. Okay, and he's working there. He has an ancestral home in India. So there will be high chances that he's having a rental income from it, property situated in India. He could be having a dividend interest income received from investments made in Indian companies. He could have an ancestral business set up in India from where he could be having his share of income as which can be considered as a part of it. If it is a partnership, if it is a private limited, then he can have a dividend from it also. Capital gain arising from a property situated in India. Capital gain from transfer of property situated in India, or capital gain arising from shares of a company which derives its value substantially from property situated in India. So all this income will be considered as income other than foreign income. So a person staying in Dubai or UAE country, if having any of these income which makes a total income of above 15 lakhs rupees, and he's by any chance staying in India for 120 or more days, then he will become a resident plus NOR. Okay, provided he is resident of UAE as per DTAAs that we will discuss in next slides. But somehow now he does a tax planning. He not even becomes a resident of Dubai. He stays less than the stipulated period over there. But he also manages to become not a resident in India. Like he stays less than 180 days in India also as per the previous laws. So will he be taxable? So we will do a case study. What amendments, how it will be beneficial, what taxes. हाँ जी नितिन जी कुछ कह रहे हैं? एकदम ठीक है भैया, एकदम ठीक है, कोई नहीं भैया, कोई एकदम ठीक है. Okay जी. So let's do a case study. Let's do a case study first over here. See, Nitinji, a person is a citizen of India as well as a person of Indian origin. His rental income earned by him during the previous year from Delhi is 20 lakhs. And income earned from business set up in UAE, which is controlled, okay, we make it easy, which is controlled from India is 10 lakhs rupees. Now he further says, he manages to stay in Dubai, UAE only for 180 days. And Dubai ka DTAA, I make you read what is DTAA with Dubai.
Dubai says B part, Article 4 of Dubai, to identify whether a person is a resident of Dubai or not. If a person has stayed at least 183 days in the calendar year, then he becomes a resident of Dubai. Fine. So as per this, we can identify a person staying less than 180 days is not a resident of Dubai. Now somehow now we take cases, number of days of stay in India. Now he's staying less than 120 days. What shall be the answer as per the previous law before amendment? Stay less than 120 days in India. He is not a resident of India by any means. So he becomes a non-resident as per the previous law if the amendment was not been made. And because he is also not resident of Dubai, he is probably not offering his global tax income of, he had a global, now he has a income from Delhi of 20 lakhs and an income from Dubai of 10 lakhs. Now in case he becomes a non-resident as per in last financial year and amendment was not made, then only 20 lakhs which was income taxed in India being his income earned from property. But now as per the amendment, let's say what happens. He becomes a deemed resident because of this section, because he is not a resident of any country, and as well as being a deemed resident. So what happens is global income will not be taxable. Now we need to see this slide, how this deemed residency or R plus NOR will affect. This is the effect, scope of income, how it impacts R plus NOR. Another point to be noted, all deemed residents will be considered as R plus NOR. This is by default, will be considered here. So income accrues or arises outside India will not be taxable for both resident plus not an ordinary resident and as well as not an ordinary resident, provided only if, mark this hashtag, only if a business is controlled or a profession is set up outside India. So the exemption is available to deemed resident only till the time he's maintaining his business as well as his profession from country outside India. But if it is considered that his business or profession is somewhere managed in India from India, then his global income will also be taxable. His income from Dubai will also be taxable. So this is the amendment we are now going to understand. So Nitin ji, is it clear? Yes sir, clear है भाई, clear है, एकदम clear है, perfectly clear. Friends, in this case, he becomes a deemed resident in option A, where 119 days he stayed. Because of virtue of this section, and he becomes R plus NOR. Section 61A, recent amendment, deemed residency because he's a non-resident of any other, he's non-resident in all other countries besides India. So what will happen? His भैया, somebody has raised the hand. क्या मैं उसे unmute कर दूं? अमन गोयल जी हैं. He want to. Please. पूछिए भैया. अमन भैया. अमन भैया क्वेश्चन पूछिए. You have raised your hand. अमन भैया, अपने आप को unmute कर लीजिए. बोलिए. Sir, no questions for the time being. I'm clear. I'm sorry. नहीं, आपने हाथ रेज किया था तभी मैंने बोला सर साहब, कोई दिक्कत नहीं. Yeah, I'm sorry, sir. I'm sorry. Okay. So shall I move ahead, Aman ji? हाँ जी भैया. So yes. He's becomes a deemed resident. Now it is stated that in this question, case study, which case study we are doing? We were doing this case study. Yes. Yeah, we were doing this case study. So his income from business in UAE, which is controlled from India. So he becomes a deemed resident.
So नितिन जी, ये आंसर आपको ठीक लग रहा है? डीम रेजिडेंट ओनली इनकम ऑफ 20 लाख शुड बी टैक्सेबल? सर मुझे ना इसमें ना एक इशू है जो शायद हाँ, सोचना एक बार इसमें सर जानबूझ के आंसर मैंने गलत लिखा है ये। नहीं मैं बताता हूँ, मेरे को बताऊँ क्या लग रहा है, क्योंकि बेसिकली जो 20 लाख की जो इनकम है, हम्म, मान लो मेरी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट हाँ, इट फॉर ड्यू टू डीमिंग प्रोविजन, ये इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होती है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। या 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं तो 15 लाख में लिखता है, वो कहता है जो इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया होती है वो आप वो हटा दीजिए। अब बार बार ये आता है, सर होता क्या है कि प्रॉपर्टी जो वो इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अगर मेरा एग्रीमेंट लंदन में हुआ या मेरा एग्रीमेंट दुबई में हुआ है, तो इसका मतलब ये इनकम एक्रूराइज मुझे आउटसाइड इंडिया हुई है। दो इट ओनली इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी की वजह से डीम टू एक्रूराइज इंडिया। जैसे मैं सेक्शन ओके 8A की बात करता हूँ, सेक्शन 10 से क्लॉज 8A 8B की बात करता हूँ, तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है उन्होंने जो इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है बट नॉट डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, बट दिस ओके written over here। तो व्हाट आई वांट टू से, रेंटल में मेरा मानना ये है, अगर उस व्यक्ति का एग्रीमेंट बाहर होगा, प्रॉपर्टी इंडिया में होगी, वो इनकम को भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एक बार को। बिल्कुल ठीक है। क्लियर हूं भैया? I agree, but we assume that his rental income was एग्रीमेंट इंडिया में हुआ है, एग्रीमेंट इंडिया में Indian हुआ, or income is being received in एकदम ठीक है, NRO account, not एकदम ठीक है, NRE accounts. ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है परफेक्ट जी, परफेक्ट, उसकी सारी इनकम NRE accounts में आ रही है, NRO accounts में आ रही है. ठीक है, Now the answer is given as per previous law. He becomes a deemed resident, then the Indian income of only 20 lakhs is taxable. But now if he becomes a deemed resident, the recent amendment is made applicable. His income from UAE, which is controlled a business managed from India, then the answer will become 30 lakhs. Even his international income, global income will also become taxable. क्या मैं सही कह रहा हूँ नितिन जी? एकदम ठीक है। लेकिन ये मुझे एक बात हो, जब आप बोल रहे हो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया 119 दिन है, तो बाकी दिन हाँ वो जी, 100, अच्छा जो आपका केस स्टडी है उसमें 180 दिन से कम रह रहा है वो। हाँ वो डीम्ड रेजिडेंट हो रहा है ना, क्योंकि अच्छा ओके ठीक है। सेक्शन 6(1) अच्छा कहता है 15 लाख अच्छा से ऊपर बाकी दिन वो इंडियन कहीं इनकम। और रहा है, बाकी दिन कहीं और रहा है, तो 180 दिन रहा है, इंडिया में 119 दिन रहा है, तो ही बिकम अ डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, भी सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, क्योंकि वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं हो पा रहा, यूएई में भी रेजिडेंट नहीं हो पा रहा। एकदम ठीक है, परफेक्ट, लायबिलिटी टैक्स भी नहीं बन पाएगा, एकदम ठीक है भैया, परफेक्ट है। हाँ जी, तो the answer given here is, please understand, this is not correct answer. Indian income यस, of entire 20 lakhs plus 10 lakhs of global income will also be taxable. This is the amendment they have एकदम introduced. ठीक है, एकदम So ठीक है, एकदम purposely ठीक we है, have written the wrong answer so that एकदम ठीक है, आपको amendment समझ में आए क्या amendment है. एकदम परफेक्ट है भैया, परफेक्ट है। हाँ, this is slightly we have gone way ahead immediately instead of going step by step. I just wanted so that we can take time and make you people understand. And similarly, when he stays 121 days, though he is becoming deemed resident, but still as per section 6(6) amendment, he becomes R plus NOR by virtue that his income is above 15 lakhs and he's controlling and managing business from India, stay beyond 120, between 120 to 120 days. So again, Indian income of 20 lakhs plus the global income of Dubai of 10 lakhs will also be taxable in India. So see, what has happened is that he is deemed to be a resident only what he could have planned by staying in Dubai 3 days 180 more, days, and what people were doing and staying in India for 119 days and managing his taxes by paying taxes only on Indian income. By virtue of this amendment, now his entire global income will be taxed in India of 30 lakhs just because he is not resident in any other country, but he's a citizen of India and is becomes a deemed resident of India. 3 दिन ना रुकने का 10 लाख पे टैक्स देने का वो चुकाना पड़ा उसे, 3 दिन और हाँ जी, तो बेटर हो जाता। या वो आपसे सलाह ले लेता नितिन जी, पहले आ जाता थोड़ा सा। ठीक है जी, if everyone is clear, we will go क्लियर to है, next क्लियर क्लियर example. क्लियर 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 क्लियर। Slightly, next one will be slightly more complicated. There we will learn how to put in place the DTAA and other things. उसके लिए मैं we will understand the example. So next example is same example almost, but let's read it carefully. Person, citizen of India and person of Indian origin. Income from sale of, now it is a different case. Income from sale of units of equity oriented mutual funds during the year of 20 lakhs from India. Okay. And income from UAE, same case, UAE, which is
10 lakhs from a business controlled from India of 10 lakhs. Now a different catch, but he stayed in UAE for 183 days or more. What has impacted now? He become liable to tax now in Dubai. He become a resident. Now he becomes a resident of Dubai. Yes. तो अपना जो डीम रेजिडेंट वाला क्लॉज था वो नहीं लग सकता. Now he cannot be a deemed resident of India. Now only option to make him resident in India is that he had to stay more than 120 days. 120 दिन से ज्यादा अगर रहेगा तो वो रेजिडेंट प्लस NOR बनेगा. फिर उसकी देखते कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी. ठीक है, पहले हम समझते हैं अब वो क्या बना. अब 119 दिन से उसने क्या टैक्स सेविंग करी, इस चीज को समझते हैं जी. 119 दिन रहने से उसने सलाह ले ली नितिन जी से. नितिन जी ने बताया यू स्टे इन दुबई फॉर 3 more days एंड मेक योर स्टे इन इंडिया by 3 days less. So he stays in India for less than 120 days now. Now he becomes a residential status of India, becomes a non-resident. Now his income will be taxable in India as per the DTAA between India and UAE. So अब बताइए जी आंसर क्या होगा नितिन भैया, उसकी इंडियन इनकम क्या टैक्स होगी? 20 लाख रुपए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स टैक्स लगेंगे और किस रेट पे लगेंगे? भैया आप देखना समझो बात भैया, मेरे हिसाब से जब आप आर्टिकल 4 पढ़ोगे DTAA के हिसाब से अब 183 दिन आपने वहां पे रह लिया तो यू बिकम लायबल टू टैक्स, यू बिकम अ रेजिडेंट इंडिया नाउ, रेजिडेंट यूएई. जब आप रेजिडेंट यूएई बन जाओगे तो क्या होगा, आप एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट यू बिकम नॉन रेजिडेंट. तो ओनली इनकम इज एक्रू अराइजिंग इन इंडिया और विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. आर गेटिंग पॉइंट? तो व्हाट आई वांट, जो भी इनकम है वही टैक्सेबल होगी. तो 20 लाख पे टैक्स जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी भैया. तो 20 लाख पे बिल्कुल सही कहा भैया आपने, बिल्कुल सही पॉइंट मारा. 20 लाख पे टैक्स लगेगा सिर्फ क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से उसने 20 लाख रुपए कमाया जो 10 लाख से ज्यादा है, शुड बी टैक्स्ड इन इंडिया. बट जो सर DTAA हमारा कहता है, I can see if I have DTAA over here. Okay, I have not. We can Google it and say Article 24 is there, India and UAE, which says that the income from dividend or equity oriented mutual funds will not be taxed of a person resident of UAE if it is earned from companies in India. Oh, अच्छा. The tax rate is 0. Okay, great. अच्छा ये उसने छक्का मारा जी सीधा. That's why आप understand people are wondering कि ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में. कोविड चल रहा, सब कुछ चल रहा, पर शेयर मार्केट बूम पे है. ठीक है जी. तो शेयर मार्केट क्यों बूम पे है जी? कुछ कारण ये अमेंडमेंट हुई है. जो दुबई के इन्वेस्टर्स हैं, यूएई के इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, their entire income will not be taxed in India now, considering this UAE this recent amendment and the DTAA, present DTAA. With this DTAA is applicable same with UAE, the same is applicable with Singapore and one more country. One more country is UAE, Dubai, and I'll just give you the name. So in these countries, the tax rate is Hong Kong, UAE, Dubai, Hong Kong, and Singapore. These countries, if you become a non-resident of India, stay less than 119 days, and you have dividend income and or you have equity-oriented sale of mutual funds, your income will not be taxed in India, even on your Indian income. There will be zero tax. The DTAA gives you exemption. This is a tax planning we have. Now, supposedly he goes beyond 2 days more, 119 days. Let's go to the next part. नितिन जी क्लियर है? अगर मैं कोई गलत बहुत ही बढ़िया एकदम ठीक है भैया, परफेक्ट है भैया. तो नेक्स्ट पॉइंट इज 121 डेज अगर वो आ जाता है तो he becomes R plus NOR. Even though he is staying in Dubai, becomes a resident, but he becomes a resident plus NOR over India. So what will happen is Indian income for sure becomes taxable in India. And what tax rate will it be? 20 lakhs. अब इस पे DTAA का tax rate हम refer करेंगे sir. When a big person becomes R plus NOR.
भैया आप मुझे ये बताओ, ये जो आर्टिकल 24 आप बता रहे हो इंडिया यूए वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें दिन भी लिखे हुए हैं या फिर ये लिखा हुआ है कि अगर रेजिडेंट होगा तो नहीं बनेगा? व्हाट वाज रिटन ओवर देयर? Sir, it says the taxable, it says that the dividend income received by non-resident from an Indian company is not taxable in UAE, Hong Kong, Singapore. If the Indian citizen who qualifies R plus NOR pursuant to amendment also qualifies as a resident of India, so it means that no status. अगर एक person नहीं नहीं, नॉन रेजिडेंट हो जाता है, मैं जो वो पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आर्टिकल कोई वन डेज का लिखा हुआ है या सिर्फ रेजिडेंटशिप लिखी हुई है? रेजिडेंटशिप लिखी हुई है सर, डेज का कुछ फिर नहीं तो भैया लिखा ये हुआ। जो अगर मान लीजिए जो आप जहाँ पे आरएनओआर बने हो, जहाँ पे आरएनओआर बने हो, तो ये हाँ, तीनों में झगड़ा रहेगा भैया, तीनों में ये झगड़ा रहेगा। चाहे आपका 121 डेज हो, चाहे एग्जाम्पल 365 दिन होते हैं हाइपोथेटिकली, हम्म, 183 दिन मैं यूएई में रह गया, ठीक है भैया, 182 दिन इंडिया में रह गया। अब हम्म, तीनों केस के अंदर मैं आर्टिकल 4 पढ़ूंगा। आर्टिकल 4 पढ़ने के बाद, आर्टिकल 4 पढ़ने का अगर मैं यूएई का रेजिडेंट बन गया, यूएई का हम्म, रेजिडेंट, और जिस हिसाब से आपने नया आर्टिकल बताया, ये मेरे भी दिमाग में नहीं था, आर्टिकल 4 पढ़ूंगा, तो उस हिसाब से तो अगर मैं रेजिडेंट यूएई का बन गया हम्म। तो मेरी इनकम तो ये वाली जो इनकम जो लिखी हुई है, ये इंडिया में टैक्स होगी नहीं भैया कभी भी। सर यही इस पॉइंट पे आते हैं, लेट्स कम ऑन दिस पॉइंट। इफ आई व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल अमेंडमेंट आर प्लस एनओआर? जी सर इस अमेंडमेंट का ये बेनिफिट हुआ, अभी हम रेजिडेंट पे नहीं गए, अभी हम यहीं पे ही आए हैं कि when one becomes a R plus NOR, the benefit of DTAA is not applicable to him. तो ऐसा क्यों भैया? ये सर उन्होंने एक्सप्लेन करा आगे, हमने इसमें चलते हैं आगे, ट्रीटी में देखते हैं लिखा नेक्स्ट हुआ है, स्लाइड ट्रीटी क्या में है। लिखा हुआ है भैया। हाँ, ट्रीटी में नहीं लिखा हुआ सर, दिस इज लॉ। when a person becomes R plus NOR or R means resident or R plus NOR, then he will be taxed as per Indian Income Tax Act. नहीं 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 See नहीं what is the नहीं impact of deemed resident under section 61A or नहीं भैया, other नहीं R भैया, plus नहीं भैया, NOR. नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं। हाँ आप जी सर। टीम सेक्शन 618 के हिसाब से अगर रेजिडेंट बना लिया, आपने सेक्शन के हिसाब से रेजिडेंट बना दिया, देखिए होता क्या, जो मुझे समझ में आया बता देगा कहीं पे गलत हूं तो मैं। सेक्शन 6 के हिसाब से पहले आप चेक करोगे कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, ठीक है भैया। ठीक है जी। रेजिडेंट हो फिर उसके बाद सेक्शन 6 में जाओगे, 6 में जाओगे, जहां पे दिखेगा कि आप आरएनओआर हो कि आरओआर हो, ठीक है भैया। ठीक है। अगर आप रेजिडेंट नहीं हो तो फिर डीमिंग प्रोविजन में जाओगे, 618 में जाओगे, जहां पे लिखा होगा कि आप डीम्ड रेजिडेंट हो ही नहीं हो, ठीक है। आप जब डीम्ड रेजिडेंट बन गए या रेजिडेंट बन गए, तो आप टाई ब्रेकर टेस्ट होगा, सामने वाला अगर 183 दिन से ऊपर रहता है वहां पर, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, तो मैं 183 दिन से वहां पे रहता हूं तो टाई ब्रेकर टेस्ट है भैया। टाई ब्रेकर टेस्ट के अंदर वो इस जो, पे आ रहे हैं सर, टाई ब्रेकर पे भी आए नहीं हम, 182 डेज अच्छा वाले अच्छा पॉइंट ठीक पे है, नहीं आए। अच्छा जब आप टाई ये ब्रेकर टेस्ट पे आओगे तो अब उस टाई ब्रेकर, मैं बता रहा हूँ, अगर डीटी डबल ए के हिसाब से अभी आप टाई ब्रेकर पे नहीं आए, अगर टाई ब्रेकर टेस्ट पे आ जाते तो उसके हिसाब से अगर यूके रेजिडेंट जाता तो किसी कंट्री में टैक्स नहीं, मतलब इंडिया में टैक्स नहीं पड़ता, इंडिया में टैक्स लगी। नहीं, मैं मान गया जी, टाई ब्रेकर पे नहीं आए सर हम अभी, हाँ भी उस टाई पे भी आ ब्रेकर जाते हैं। ठीक है हम अभी भैया, टाई ब्रेकर से पहले ही हैं एकदम कि ठीक है भैया, एकदम ठीक है, अभी परफेक्ट ही, परफेक्ट। अच्छा टाई ब्रेकर पहले डिस्कस कर लेते हैं, अब आप करा ही रहे हो। अगर वन पर्सन इज मोर स्टेइंग मोर देन 182 days, देन ही बिकम्स अ रेजिडेंट ऑफ यूएई आल्सो एंड इंडिया आल्सो। यूएई एकदम में ठीक है भैया, 183 डेज से रेजिडेंट हो गया, इंडिया में भी 182 डेज से रेजिडेंट हो गया जी। एकदम ठीक है। Now we have to do tiebreaker rule to see which country is he resident falls. There's a couple of criteria, जैसे कि more dominance किस country में है, properties किस country में situated हैं, कई सारे rules हैं, better बताएंगे। तो उसके accordingly अगर he becomes a resident of India, that his more dominance or likelihood to stay in India proves to be in India, then the entire 30 lakhs global income as well as 20 lakhs will be taxed in India, and no benefit of DTAA will be given to him because he becomes a resident of India. परफेक्ट है भैया, His एकदम entire परफेक्ट है, 20 lakhs will, बिल्कुल perfect हो गया ना भैया, एकदम ठीक है। will be taxed in India as per the slab rates. No concessional rates or DTAA benefits will be given. That's over, period. Now a special case is there because of this amendment, which is that if in case he stays between 120 to 180 days in India and becomes a special deemed R plus NOR in India, and he also maintains a residential status of UAE, which is 183 days. तब भी टाई So ब्रेकर टेस्ट now, चेक करेंगे भैया, तब भी टाई ब्रेकर टेस्ट चेक करेंगे, क्योंकि ये रेजिडेंट है, वहां पे भी रेजिडेंट है, तो वहां पे दोनों में टाई ब्रेकर टेस्ट चेक करेंगे। जो आपने चारों टेस्ट बताए हैं, हैबिचुअल अबाउट, देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया भैया, नेशनैलिटी हो गया, परमानेंट होम हो गया, ये चारों बिल्कुल
बिल्कुल जहाँ सही पे वो है। रेजिडेंट बन जाएगा वहां का रेजिडेंट बन जाएगा, एकदम ठीक है भैया, परफेक्ट। बिल्कुल टाई ब्रेकर टेस्ट करेंगे जी। पर अगर आर प्लस एनओआर है, मेरा ये मानना है, अगर इस आंसर में ये ना लिखा होता कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, business is controlled from Dubai only, राइट, then without any debate 20 lakhs would have been taxable in India immediately without doing any tiebreaker. हाँ एकदम ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है ना सर? ओनली टू चेक द वेदर 10 lakhs should be taxed in India, उसके लिए टाई ब्रेकर लगेगा। एकदम ठीक है। ठीक है, लेकिन भैया ब्रेस्ट लेकिन 20 भैया lakhs। लेकिन भैया लेकिन भैया आपने जो बताया मेरे को दुबई में, जो आपने आर्टिकल 24 बताया मुझे, उसका ये थैंक्स अ लॉट, आपने ये बताया, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर इस केस में भी जब मैं आरएनओआर हूँ और मैंने चेक किया, मैं आरएनओआर हूँ और यूएई में रेजिडेंट हूँ, ठीक है भैया, टाइब्रेकर टेस्ट होगा तो मैं एक कंट्री का रेजिडेंट रहूंगा, तो इसका मतलब आई विल बिकम अ यूएई रेजिडेंट, आई विल बिकम रेजिडेंट इन इंडिया। तो उस केस Yes, वो वाला जो डीटी डबल वाला जो बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा भैया, मैं ये कह रहा हूँ आपको। वो मेरे को डाउटफुल है भैया कि अगर हम इंडिया के रेजिडेंट हो जाते हैं ट्राई ब्रेकर के बाद, देन डीटी डबल ए वैनिशेस, आई बिलीव ओनली द टैक्सेबिलिटी विल बी एज पर द इनकम, चलो इंडियन हम इसे इनकम एग्री टैक्स टू एक्ट। डिसएग्री कर लेते हैं, एग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत चलो नहीं ठीक है भैया, है, आगे चलते हैं वी भैया, विल कोई स्टडी दिक्कत फर्दर एंड लेट्स नहीं। हाँ हैव जी, हाँ अनदर डिबेट ऑन दिस। जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया। तो इम्पैक्ट ऑफ डीटी डबल ए, चलिए एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, शायद उससे हम सिमिलरली वी डू रीड द डीटी डबल ए बिटवीन इंडिया एंड यूके। उससे पहले एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं क्या है, फिर डीटी डबल ए पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन origin has a rental income from Indian property situated in Delhi of 20 lakhs and from a property in London, from there also is having a rental income of 10 lakhs. ठीक है जी, वेरी सिंपल एग्जांपल। पहले ये करना चाहिए था मैं आईटी, फिर उस पर थोड़ा दिमाग और लगाते। इस केस में he has an income of more than 15 lakhs in India. We presume that he is not a resident of London. He is staying in most of the time in India and traveling abroad, but he is not maintaining a residential status of any country like London or any other. So he stays most of the time in India only. तो उसमें उसका residential status check करते हैं. He stays in India for 119 days, which is less than 120 days. But he is not a resident of any other country. So same case applicable bhaiya. He becomes a deemed resident of India. By deemed resident, only his Indian income will be taxable. No foreign income will be taxable. So Indian income of 20 lakhs only is taxable. 10 lakhs rental income by any means cannot be taxed in India. We presume that rent is received only in his NRE accounts, which is maintained in London. And Delhi income is taxable in India because rent must have been received in his NRO accounts, which are maintained in Delhi or India. So only being a deemed resident, 20 lakhs was made taxable to him. Otherwise, if this amendment was not there, the entire 120 not much difference would have been there. 20 lakhs would still have been taxable to him. राइट है, ठीक है भैया, Right, sir? एकदम परफेक्ट है। Now 121 days, if he stays, he becomes R plus NOR. Same status, not much difference. 20 lakhs is only taxable. But if he stays for more than 180 days, the usual status, entire global income is taxable for him. इसके लिए DTAA इसलिए helpful है. DTAA between India and UAE says that the immovable property which subject to provisions of shall be taxable. यहाँ पे पढ़िए, the term immovable property shall in any case include property, accessory, immovable property, livestock, and this property, Article 6 says, shall be taxable only in the contracting state where the property is situated. It means अगर वो R plus NOR भी हो जाता है तो भी जो 10 लाख की इनकम उसकी लंदन से, वो लंदन में ही टैक्स होगी, और जो दिल्ली की 20 लाख की इनकम है वो दिल्ली में ही टैक्स होगी. वेरी क्लियर DTAA बिटवीन इंडिया एंड लंदन. So any doubt please, so I may move ahead on this. परफेक्ट है भैया, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है जी. So let's come to next point. So case 2, same point, same case. A person of Indian origin and a citizen of India, rental income by him earned from Delhi of rupees 20 lakhs per annum. Further, he had a professional income of 10 lakhs through a practice of an advocate in London. So we take example that he is practicing in a Indian constitution. I don't want to name the lawyer. So he's practicing in Indian at International Court of Justice, taking Indian cases,
Indian government cases, or he's practicing a famous lawyer at Supreme Court of India, practicing taking cases from London in matter of constitution of Indian law. So we can presume that this practice, what says sir, practice has been managed or set up from India. Can we say that? बड़ा झगड़ा है भैया, बहुत बड़ा झगड़ा है। ड्राइव्ड वाला जो वर्ड है, क्योंकि उसका मान लो बार का काउंसिल इंडिया इंडिया का है, तो क्या ये बनेगा ही नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा झगड़ा है भैया। हाँ, झगड़ा है, बिल्कुल डिबेटेबल पॉइंट है। yes. बहुत सही पॉइंट करा जी आपने। So let's चलो we take our own humble opinion and judgment to solve this matter, considering beneficial or a conservative view for Indian government, so that we don't hide any taxes on this point. So number of days in India, he stays 119 days. He becomes a deemed resident of India by same clause. He is not maintaining any residential status anywhere besides India, not paying taxes any other country. So what happens? Only 20 lakhs of income we can say is taxed in India. But if we say the practice of advocate in London, provided that we prove that the practice of from London has nothing to do from practice made in India. Okay, otherwise this 10 lakhs will also be made taxed. This needs to be done very carefully. Now, if he becomes a NOR, resident plus NOR, 121 days. So his Indian as well as foreign income will be taxable, since why? There they have assumed that the practice as an advocate is in London, but that is deemed that the practice has been managed from India. And similarly, 182 days resident. So basically R plus NOR and a resident has a much difference, except the fact that his global income can be made taxable, provided that entire income, international income, foreign income, is deemed to have managed or set up from India. Like business is controlled from India and practice can be managed or set up from India, then his entire global income becomes taxable. ठीक है नितिन जी? Can I move ahead on this? जी भैया, perfect. Any doubts on this? एकदम ठीक है भैया. So what is the impact of becoming a deemed resident under section 6(1)(a)? जो अभी आपसे भैया डिस्कस कर रहे थे, जो आपने बोला कि what will happen. So as per my humble understanding, what I have obtained, there are increase in scope of total income is there, loss of exemptions is there. Various exemptions are available in the hands of non-residents. Like, however, exemptions like interest to NRE account or FCNR deposit will still remain as it is. R plus NOR being status. So non-resident person having an interest income in NRE account, will it be taxable in India? NRE account, not NRO account. NRE account is never taxed in India. It is an external account maintained in foreign currency, usually maintained by seafarers and people working abroad. Whatever interest income these people have, this is a tax planning source. They usually maintain and park in this account, and whatever interest income they have, they usually offer for taxation only in country in which they are staying or maintaining a residential status, because India, they maintain a non-resident status and this income is not taxed in India. And even if they become a NOR, resident plus NOR, the same status will be there. The NRE account interest income will not be taxed in India. So Nitinji, here we have this point, loss of concessional tax rate, presumptive tax scheme of DTAA if a one person or a treaty benefit of DTAA is lost if a person becomes a resident or R plus NOR as per these recent amendments. Importance of tiebreaker rule will increase to determine the status of residential status under DTAA. If individual qualifies a resident of India after applying the tiebreaker test, various concessions given to the DTAA with regard to capital gain, dividend, etc. will be lost. This is my humble opinion. I beg to differ with Nitinji.
नहीं भैया, यही बात तो मैं बोल रहा था आपको, यही बात तो मैं बोल रहा था। देखो मैं क्या यही तो बात बोल रहा था आपको, अगर मेरा RNOR है, मेरा स्टेटस RNOR है और मैं दुबई का भी रेजिडेंट हूँ, तो टाइम ब्रेकर टेस्ट पे जाऊंगा। और जब टाइम ब्रेकर पे अगर मैं दुबई का बन गया तो मैं इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन गया। अगर टाइम के अंदर अगर मैं इंडिया का बन गया तो मैं दुबई का बन गया, तो उसके इसमें आर्टिकल 24 का बेनिफिट ही नहीं होगा। यही बात नहीं होगा, बिल्कुल। मैं भी यही कह रहा था, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन था, हाँ ये जी पॉइंट हाँ था हमारा। एकदम ठीक है, एकदम दिस वाज द पॉइंट हाँ जी। दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दुबई as per the status, but जी भैया, somehow I also becomes the resident of India by staying 182 days. इवन मैं 120 दिन के अंदर भी कह रहा हूँ भैया, 120 दिन के अंदर भी आप रेजिडेंट बने, उसके बाद आप ROR RNOR चेक करते हो। मेरा ठीक है जी। था तो मैंने बोला था आप टाई ब्रेकर टेस्ट चेक करेंगे, टाई ब्रेकर हाँ, चेक करेंगे तो अगर आप दुबई के रेजिडेंट हो गए तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे भैया, राइट टू तो अप्रिशिएट। पर मेरी इंडियन इनकम तो फिर भी टाई ब्रेकर टैक्सेबल टेस्ट में होगी इंडिया इंडिया के में। रेजिडेंट रहे तो RNOR तो हो ही हो आप, क्या दिक्कत है भैया। ठीक है, अगर मैं टाई ब्रेकर में दुबई का रेजिडेंट हो गया, सर मेरा क्वेश्चन ये है। दुबई का अगर दुबई का रेजिडेंट बन गया तो यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। या आई एग्री, बट 20 रेजिडेंट lakhs नहीं ऑफ रहोगे इनकम तो विल। RNOR नहीं रहोगे, समझो बात, जब रेजिडेंट नहीं रहोगे तो RNOR नहीं रहोगे, राइट। ठीक है, मैं तो नॉन सारे रेजिडेंट बन बेनिफिट जो आप जो आर्टिकल 24 वाले बता रहे हो सारे बेनिफिट मिलेंगे मेरे को। सर मैं नॉन रेजिडेंट बन गया इंडिया का, हाँ और जी, तो जब मैं नॉन उसके रेजिडेंट बन टाई गया, ब्रेकर के बाद हाँ तो तो मेरी आर्टिकल 20 24 लाख जो की आप इनकम जो थी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे, इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं मुझे? लगेगा ना भैया, नहीं लगेगा, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं यही तो फर्क बता रहा हूँ आपको मैं। सर क्यों नहीं लगेगा बताइए? भैया बता तो रहा हूँ आपको, बता तो दिया, सेक्शन बता। इनकम इंक्लूड फ्रॉम अराइज फ्रॉम इंडिया तो है ही है ना सर ये? नहीं भैया आप समझो मेरी बात, जब आपको जब मैं रेजिडेंट बन गया तो मोमेंट आप बिकम रेजिडेंट इन यूएई, तो मैं हाँ, समझे बात, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए टाइम ब्रेकर टेस्ट क्या होता है सर। ये ट्रीटी क्यों बनाई गई है, जहां पे देखिए आर्टिकल 1 ऐसे बोलता है, दिस ट्रीटी इज एप्लीकेबल टू द रेजिडेंट ऑफ ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फिर आर्टिकल बोलता है अगर आप दोनों कंट्री के रेजिडेंट है तो इन, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल है जो 4 टेस्ट लगाएंगे, अगर मान लीजिए कोई अदर देन इंडिविजुअल है तो पोएम का टेस्ट लगाएंगे, राइट। ठीक है। इसमें वो ये चाहते हैं कि भैया आप एक पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक ही कंट्री के रेजिडेंट, तो इसका मतलब द मोमेंट यू बिकम अ रेजिडेंट इन यूएई यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। द मोमेंट यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया तो आप RNOR का स्टेटस नहीं रहेगा आपका, आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो आई जो एग्री, मैं नॉन रेजिडेंट हो गया सर, आई हाँ बिकम अ नॉन रेजिडेंट, बट स्टिल माय इनकम earned and accrued from India will be taxed in पर India भैया or not? आपने खुद तो आर्टिकल 24 बताया मुझे, मेरे को तो ध्यान में सर नहीं, आर्टिकल 24 तब लगेगा। जब मैं ओके, रेजिडेंट बन गया, यही नहीं तो कह नहीं, रहा हूँ सुनिए आप। सुनिए सुनिए सुनिए, DTAA का बेनिफिट तब मिलेगा अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं बिफोर अप्लाइंग टाई ब्रेकर रूल। इफ आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट नहीं लॉ आफ्टर ये अप्लाइंग नहीं, टाई मुझे ब्रेकर मुझे रूल। मुझे आपने तो ये बताया था आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए मैं रेजिडेंट ऑफ दुबई तो ऐसे दूसरी कंट्री का अभी, बट आर्टिकल है तो आर्टिकल पढ़ लेते हैं वो वाला चलिए ठीक है सर, आर्टिकल। वी कंक्लूजन, एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन सर इस पे डिबेट करते हैं दोबारा एक बार। एकदम ठीक है, फेयर एनफ, ठीक है, ठीक है सर, अदरवाइज वी विल लूज द एंटायर टॉपिक। नहीं एकदम ठीक है, एकदम फेयर एनफ, फेयर एनफ। आई समहाउ एग्री नाउ, आई फील आपने ठीक कहा, जब मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा देन द आर्टिकल विल अप्लाई एंड बेनिफिट ऑफ DTAA विल बी गिवन टू मी। जी आई भैया, एग्री। जी भैया, जी भैया, जी भैया। आई बिकम वाइजर नाउ सर आफ्टर टॉकिंग टू यू अरे नहीं नहीं पीपल। नहीं, कैसी बात है, आपके जाई कर रहे हो मुझे तो ये यूएई और सिंगापुर का ही पता नहीं था, आर्टिकल 24 नहीं था, आपने अच्छा बता दिया, अब लोगों को वहां पे भी भेजना शुरू कर देंगे। तभी तो सर शेयर मार्केट बूम पे आजकल। मुझे नहीं पता था, रचित ने सारा काम कर चुका है, रचित ने सारा काम कर। नहीं मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने रात ही पढ़ा है जब आपने कहा कि आपने ये, तो थोड़ा फॉलो कर रहा था कुछ टाइम से मैं इन चीजों को। जी सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स, आई थिंक हाउ मच टाइम सर वी हैव ऑन दिस, और है सर भैया, अभी तो 3 बजने में 5 मिनट, अभी चिंता है ब्रो, अभी तो आधा घंटा और है, हम ओके क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप बोलोगे तो। okay, so another benefit which we what we can give is to, beside treaty benefits being laws, that like if benefit of R plus NOR status may not be available on moving back to India. This is a very typical case, it needs to be understood. अब इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, इन द मीनवाइल इसके बाकी पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। Increase onus to substantiate non-taxability of income. Of course, when the person becomes R plus NOR deemed resident, then he has to offer his entire income for taxation, or if he's their non-taxable income, then that also has to be declared under section 10. So he has an increased onus to substantiate his non-taxability. आई Onus बिलीव on, जो सर मुझे लगता है रचित भी, आप ये वाला पॉइंट है जो कल आप मुझे बता रहे थे सर, सेक्शन में जो जैसे सेक्शन 917 916 के अंदर क्या होता है, रॉयल्टी और FTS के अंदर व्हाट, अगर मैं
रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, इट इज ऑल टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है भैया। हमें रेजिडेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि ये जो सर्विस में ले रहा हूँ नॉन रेजिडेंट से, इट इज बेसिकली यूटिलाइज इन द बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। अब क्योंकि जबकि नॉन रेजिडेंट जब नॉन रेजिडेंट पेमेंट करता है तो वो हमेशा टैक्सेबल नहीं होता इंडिया में, अनलेस एक्सेप्शन में फॉल करे कि भैया इट इज बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। अब ऐसे केस में पहले मैं नॉन रेजिडेंट था, अब ड्यू टू डीमिंग प्रोविजन स्टेटस रेजिडेंट बन गया, तो अब 916, 915 के अंदर ये दिक्कत क्या आएगी कि हमेशा ये माना जाएगा ये इनकम टैक्सेबल है। अगर मैं कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं, पहली बात ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सर्विस मेरे को यूटिलाइज कर रहा हूं फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। एकदम ठीक है। So moving at 7th point, onus on companies expanded under section 68, right, very true। एक बहुत बड़ा प्ले था, टैक्स प्लानिंग प्ले था कि सर जब भी हम शेयर सब्सक्रिप्शन इनकम या शेयर अलॉटमेंट करते थे टू इंडिविजुअल्स, तो वो सारे हमारे बिल्डर्स वाले केस लॉ लग जाते थे, निपुण बिल्डर्स एंड एसएलपी जो थी बड़ी फेमस एक 1991 की, वो एप्लीकेबल हो जाती थी, जो ओवररूल होगी बाद में, दैट वी क्रेडिट वर्दीनेस, the transaction clarity, the credit worthiness, the source of income and everything, genuineness of the transaction has to be proved by the company, state even declaring that the source of income of that Indian resident, complete एक source of nexus बनाना पड़ता था पैसे का कि पैसा कहाँ से आया। But if that income was from a non-resident, not income, but share subscription money or share purchase has been made by a non-resident in an Indian company, then the benefit was that only the source of genuineness of transaction was to be given, that money has come through a banking channel. No need of genuineness or the credit worthiness of that NRI was to be given. In most of the cases, this judgment was accepted also. So this was a major tax planning loop which has been covered. If a person has some substantial interest in India, he would be visiting India for some time. At least 120 days, 4 months is a very meager time. So he becomes a resident and he will be covered under section 68 explanation to provide the sources of his income. Or otherwise he could become a deemed resident also, by virtue that these people usually who were doing tax planning were not maintaining any tax, purposely were not maintaining any tax residential status in any country. They were staying less than 180 days in Dubai, they were staying less than 180 days in India, and they were staying 5, 7, 10 days in some Middle East other countries, so that they were purposely avoiding their residential status. This tax planning loop has been completely avoided now. Now government has all ears on all the tax planning, we can of course say that. Similarly, on issuance of shares at a premium, company was required to pay tax at a difference of consideration received at the fair market value of the shares at the actual consideration, which was applicable only for a share was allotted to an Indian resident, but was not applicable to NRI. Even this loophole will be capped if a person is covered as a resident, as a deemed resident under these sections. Basically, the intention of limiting the section or decreasing the period of stay from 182 to 120 days, or making him a deemed resident even harsher section, is these 7-8 points which the people want. Government want that the were becoming a high source of tax planning for HNIs, which has been clubbed recently. I say kudos to government for making this brilliant amendment, which is a tax planning source has been clubbed. Now, my point is this. What was happening is that initially what was happening, supposedly we take example, we are covering this point, 6th point. Benefit of R plus NOR may not be available if a person is moving back to India. How come this can happen? What is the definition of R plus NOR? Let's study that. हमने ये definition मैंने इसलिए तब इतनी डिटेल में नहीं करी थी. Who is the R plus NOR? Individual will qualify under section 6 subsection 6 to be NOR if he, let's read the first 2 points which are initial points. He is a non-resident in 9 out of 10 previous years. ठीक है नितिन भैया? एकदम ठीक है भैया. Or he stays in India for
922 days or less during the 7 previous preceding years. Okay, ji. So these points will make him a R plus NOR. He is a resident but becomes a non-resident. R plus resident plus a not an ordinary resident. If these above 2 points are, any of these 2 points are considered or taken care of. So a person coming from abroad with the intention to stay in India forever, settling in India, usually has a lot of income, global income also in shares or equity investment in made in abroad or Nasdaq or rental income in New York. Like a lot of people came to India. I don't know how many, but government claims that a lot of people came back to India after that recent Joe Jones or that summit at New York by a famous personality from India. So let's come back to this example. Let's presume the previous law is there. This guy is beautifully coming back to India in the financial year 2020 2027 2027. Okay, now if we see his previous 7 years, he has purposely ensured that he stays less than 729 days in India. Just check 90, 150, 121, 131. And he's also maintaining a regularly non-resident status in all these years. So he's qualifying both the conditions simultaneously. Stay less than 729 days in 7 preceding financial years and maintaining non-resident status in 9 out of 10 preceding previous years. So both his conditions are met. So as per the previous law, which was before amendment, if this guy comes to India in 2027, he becomes a non-resident plus NOR. So his income, which is not deemed to have accrued or arise from India, or a foreign income, you can say, or income which is not from a business setup in India, or a business managed or controlled from India, or a practice or professional income managed from India, will not be taxed in India. This guy can do a good tax planning for a couple of years. But somehow, after this amendment, what has happened? See, this 150, look at the second point. In 2021, he stays 150 days, though he was a non-resident, but he becomes a deemed R plus NOR under section 6, subsection 6, revised amended. Now again 121 days, he again stay more than 120 days. Stay more than 120 days again in when he stays for 135 days. So he's purposely becoming a non-resident in 3 R plus NOR in 3 previous financial years, which is 2021, 2022, and 2023. So his purpose is defeated of becoming a NOR when he comes to India. Here's the answer for this. See, the tax planning which people used to do has been clubbed here also. This individual comes back permanently India in year 2027. He will classify as ROR but not as RNOR because individual is in India for period of though the individual is in India for period of less than 729 days in last preceding 7 financial years, but still individual is not an NR in last 9 after 10 preceding years. Hence, his global income will be taxable from the year in which he comes back to India, which is a huge setback. I don't know how many non-resident Indians would like to come back to India, considering all these harsh amendments being made. Similarly, we have few other cases where these amendments will have. I can discuss this in detail also, but before that, I would like to know any doubts in this up till now. Nitin Perfect ji, है भैया, perfect है, perfect है भैया, perfect है. So let me come back to our basic impact. What we have studied up till now, Nitin ji, residential status of individual we have covered, scope we have covered. Scope is this: what all income is taxed in India. This is scope under section 5. What only difference is made if a person becomes a R plus NOR is that
his global income could be made taxable only if that income is managed or controlled from India. Otherwise, that income will still remain non-taxable. He will enjoy the same status, same benefits as he becomes a non-resident. So only this difference is there. So now to conclude further, I have agreed on this point with Nitinji. If a person becomes a non-resident after a tiebreaker rule, which brilliantly Nitin Bhaiya explained, then his entire income will not be taxable in India, but in Dubai, UAE. Okay, ji? So this we have considered. Any doubts, please ask me on this. Besides this, there are few illustrations I have to conclude. I have taken few illustrations which self-explanatory also, where I believe is the impact of these amendments. What impact a person if becomes R plus NOR, how he becomes a taxable. Let's go through one by one. If any doubts, please ask me. There is a point that the rental income from property situated in India, 20 lakhs. If he is a non-resident, is still taxable, and if he's R plus NOR is still taxable. No much difference. So what next point? If interest income is received from an Indian company on bonds or a specified instruments, the interest income is of or a dividend income is of 40 lakhs. So if he's a non-resident, taxable at special rate of 5% as per section 115A in the hands of non-resident. But if he becomes R plus NOR, taxable at normal slab rate. This is the big impact. Benefit of all concessional tax rates have been foregone. Have a look at this. We have, Nitinji, like we discussed, point number 2, loss on concessional tax rates. Even benefits under section 115A to companies, if they become resident, R plus NOR in these foreign companies will not be available. They will not be available for presumptive taxation or benefit of section 115BA, where 22% tax can be made to companies if they forego their MAT. Right, Nitinji? Perfect. Interest, third point, interest payable by units located in international IFC, financial center, in respect of money borrowed from 1st September onward. This was a special scheme where the income, as per Indian Income Tax Act, or special concessional rates was given, in which they were made exempt in the hands of non-residents, so that more and more investments can come to Indian International Financial Services Center. But if this guy becomes a R plus NOR by virtue of his stay of more than 120 to 120 days, or by being a deemed resident, then this entire income will be taxable as slab rates. No benefit of special rate is given to them. So this is eye opener, a special tax planning which people should be considering. Fourth point, Nitinji, dividend income from Indian company, the point which we just discovered. If it's 60 lakhs rupees, more than 10 lakhs, it has to be taxable depending on DTAA. Usually it is at 10% in most of the countries, hence I have written it 10%. Considering special rates for UAE, Dubai, Singapore, and one more country I just given, and Hong Kong, where the tax rate is nil. So in such cases, otherwise the tax rate is 10%. But if person becomes R plus NOR, this benefit is gone. Like we have discussed, the tax will be at the normal slab rates. No benefit of DTAA will be given. Similarly, interest on FCNR accounts. Usually this is not taxable in the hands of non-resident. And similarly, like we have just discussed, this will still remain exempt in the hands of non-resident, because interest on FCNR accounts as well as NRE accounts remain the same status as of non-resident, is similar for R plus NOR. Any doubts, please? Moving ahead, income accruing or arising in and outside India, say in UK, UAE or Singapore, they have considered the same point. Income accruing or arising in India, arising outside India,
See, income accruing arising outside India is anyhow cannot be taxed in India if it's managed or believed to be managed outside India. There is no established P in India. Will always remain outside taxability, being a international income under Section 9, not taxable in India, even if he becomes an NOR. But if a 6 point, if we add income accruing arising in India, outside India, in UK, UAE, Singapore, but the business is considered to have controlled and managed from India, from which these interest incomes are being derived, then this for R plus NOR, this 60 lakhs, the last point will change, will become taxable. This could have been the 7th point in this slide. So I can just tell you what I have computed out of the total income of roughly 1.20 lakhs, 120 lakhs. He had to offer additional income of 41 lakhs if of 40 lakhs if he this as per this new tax laws. So my humble conclusion, before I conclude, any doubts, please let me know. Nitin ji, any doubts, anybody? सर भैया इनके सोमानी जी ने हाथ रेज किया है, मैं उनको अलाउ कर देता हूँ. सोमानी जी पूछिए. हाँ जी नमस्कार. बताइए सर, बताइए ना. मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर कोई 10 साल से ज्यादा बाहर रहता है एंड ही इज रिटर्निंग बैक टू इंडिया, तो नाउ विल ही बी एनओआर फॉर 1 ईयर और 2 इयर्स? एक बार फिर से क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई 10 साल से ज्यादा बाहर रहा एंड ही वाज एनआरआई फॉर मोर देन 10 years. Person of Indian origin stays outside India for 10 years. Okay. Yeah, and now he's returning back. Then for how many years he will become not ordinary resident? And was he here in between for any period, or we presume he never was in India for last 10 years? No, of course he will be there for 20-30 days in a year. Less than 120 days in all this. Yes. So for how many years he will be n plus? Your question is for how many years he will be NOR. Your question is this. So let's come to the slide. He will be N plus NOR if he is non-resident 9 out of 10 previous year, which he will be there in first year, bhaiya, no problem. Yes. In next year, he will be already a resident in one of the year. Yes. So first for me for 2 years, first 2 years he will be R plus NOR. From third year onwards he will becomes a R plus OR, provided his stay in last 7 years was less than 729 days in all these years. In 7 years, less than 729 days. Provided he was maintaining a residential stay in India of less than 729 days in last preceding 7 years. And the first year he came to India, he became a resident plus NOR, R plus NOR. Am I right, sir? Yes, please. And second year again he became R plus NOR. So from third year, his 9 out of 10 previous year, preceding year exemption, he is not able to gain it, take it. So it will be for maximum 2 years if he stays less than 729 days. Yeah, for maximum 2 years, somebody can maintain a R plus NOR status. Okay. And if somebody सर समझ जी, इसमें ये भी हो सकता है. अभी रचित भैया ने यही बात आपको समझा रहे हैं. एक बार उसी स्लाइड पे आओगे बड़े भैया, उसी स्लाइड पे आओगे. हाँ जी, हाँ जी. सुमानी साहब, रचित भैया आपको ये समझा रहे हैं कि आप देखिए चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई, आपका स्टेटस RNOR का, राइट. ये पहली कंडीशन तक आप 2 साल तक कहीं दिक्कत नहीं है. हाँ जी. थर्ड ईयर जब सुमानी साहब एक मिनट, जब थर्ड ईयर में आएंगे तो पहली कंडीशन में दिक्कत आ जाएगी. तो रचित भैया ने आपको बोला है अब आप सेकंड कंडीशन देखें 729 दिन वाली, ठीक है भैया. अब ये भी हो सकता है कि पता लगा मैं पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले 8-9 साल पिछले 10 सालों तक आप जो बता रहे हो मैं एक दिन भी इंडिया नहीं आया, एग्जांपल, राइट, या 25-25 दिन भी आया, और अगले साल में 182 दिन से ऊपर रहता हूं, उससे अगले साल भी 182 दिन से ऊपर रहता हूं, राइट. प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट. तो मेरे 729 दिन नहीं हो रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट. हाँ जी.
जैसे ही मेरे 729 दिन होंगे तो यहाँ पे मेरे को फायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं क्लियर हूँ आपको सर? तो आपको रचित भैया समझा रहे हैं कि कोई भी चीज पूरी हो गई उस केस में स्टेटस आपका RNOR रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको। और मैक्सिमम वो पीरियड अगर सब कुछ आपकी गॉड फॉरबिडिंग यू वर इन गुड लक, एवरीथिंग वाज इन योर फेवरिंग, तो आप मैक्सिमम 2 years रह सकते हैं R+NOR। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके 729 डेज कहाँ पे एक्सीड होने लगे हैं। बस ठीक है। हाँ जी। और अगर जो 10 साल से कम बाहर रहता है तो देन इमीडिएटली ऑन हिज रिटर्न ही इज रेजिडेंट। R+NOR बनेगा सर पहले वो। नहीं, NOR। R+OR बन जाएगा ना, और क्योंकि अगर वो 10 साल नहीं रहा, मान लो कोई 7 साल रह के बाहर वापस आ गया। हाँ तो यस, हाँ, यस, 10 साल से अगर कम है। 7 साल, सात। ये अगर 7 साल रहा तो आप नीचे वाली कंडीशन देखना शुरू कर दोगे ना, 729 दिन वाली बात सर। बिल्कुल बस, ठीक। बिल्कुल। मानी साहब आप देखिए ना, दोनों कंडीशन में से कोई भी मैं हिट कर लूंगा तो मैं RNOR मेरा स्टेटस रहेगा फिर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। Thank you, Bhai Sahab, for having a decent, good query. I think even we feel enriched from your query. Some points have been clear to us also. अरे क्यों खिंचाई कर रहे हो यार? अच्छा नहीं sir, the conclusion is that the impact of amendment is only such that Indian citizens having total income exceeding 15 lakhs who are outside India comes visit to India for period exceeding 119 days, which was initially 181 days, would be severely impacted, I believe. Considering the adverse impact of amendment, Indian citizen, in order to not qualify this R+NOR resident status on account of stay in India, should maintain that or ensure that period of stay in India should never exceed 119 days in any financial year, or further can also try to maintain a status where their income in any financial year from India sources other than foreign income कैन नॉट एक्सीड 15 lakhs। ये नितिन भैया बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। ये मैं चाहूंगा 5 मिनट नितिन भैया लगाएं इस पे कि कैसे इंश्योर कर सकता है कि इंडिविजुअल की उसके इंडिया की प्रॉपर्टी से इनकम 15 लाख से ऊपर एक्सीड ना करे। मान लो उसको एक रेंटल इनकम आनी शुरू होने लगी है एक और, या एक बिजनेस से इनकम आनी शुरू हुई है, वो 15 की 14 पे पहुंच गया, तो वो कैसे इंश्योर करेगा? नितिन जी पहली कुछ। बात तो भैया मैंने हमेशा ये बताया, देखिए इनकम है सेक्शन 5 और 9 की, सिर्फ 5 बताता है कि आपकी इनकम का स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है। हाँ और जी। ये आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से एक स्लाइड पे एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि इनकम एक्रूअराइज इंडिया, डीम्ड टू एक्रूअराइज इंडिया, देन एक्रूअराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, फिर रिसीव्ड इंडिया, डीम्ड टू रिसीव्ड इंडिया, सब एक्सप्लेन किया हुआ था आपने एक स्लाइड के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो रेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मैं रेंटल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी के केस के अंदर क्या होता है सर, जब भी आपका एक्रूअल होता है, एक्रूअल डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट कहां पे हुआ है, दैट इज द सोर्स। क्या है आपका सोर्स? क्या है आपका एग्रीमेंट। सोर्स आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉपर्टी से रेंटल नहीं आता, प्रॉपर्टी तो खाली पड़ी रहती। तो व्हाट आई पॉइंट, तो इसीलिए आप देखोगे सर सेक्शन 911 में वहां पे डाला इनकम एक्रूअराइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थर्ड लिम में फ्रॉम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, राइट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई उन्होंने 911 में डाला ये बात को कि अगर बिल्कुल। ये काम एक्रूअराइज होता, प्रॉपर्टी होने से एक्रूअराइज होता, तो कभी आपको सेक्शन 9 में डालने की जरूरत नहीं थी। तो फिर पॉसिबिलिटी आप क्या कर सकते हो, बिकॉज व्हाट हैपेंड, जो हम पहले मैं और रचित डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे 15 लाख रुपए की जो इनकम लिखी हुई है, 15 लाख की इनकम उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन की है कि जो इनकम बाहर अगर एक्रू हो रही है तो वो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन थोड़ा बता रहा हूं, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, कुछ इनकम ऐसी होती है जो एक्रूअराइज तो बाहर हो रही हो पर वो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया भी हो रही हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई इनकम एक्रूअराइज इंडिया बाहर हो रही हो बट डीम टू एक्रूअराइज इंडिया हो रही हो। जैसे मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं, मेरा रेंटल एग्रीमेंट लंदन में साइंड है पर प्रॉपर्टी इंडिया में, तो दो सोर्स इज इन लंदन, तो इट इज एक्रूअराइज इन आउटसाइड इंडिया, बट ड्यू टू सेक्शन 9 इट इज डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया। ऐसी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए रचित भैया टेक्नोक्रेट है, रचित भैया यूएसए चले गए और यूएसए में जाके सर्विस दे रहे हैं। जब यूएसए में सर्विस दे रहे हैं तो इंडिया ये बोलेगा कि भैया दिस सर्विस इज एक्रूअराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, बट मान लीजिए वो सर्विस इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो ऐसे केस में सेक्शन 917 ये बोलता है कि वो दो दिस इनकम इज एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया बट दिस इनकम इज डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया आल्सो। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब आप सेक्शन 6 की बात करते हो और जो सेक्शन 6 में 15 लाख की बात लिखी हुई है, वहां पे उन्होंने सर डीम टू जो इनकम एक्रूज इन इंडिया उसको एक्सक्लूड नहीं की है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप सेक्शन 10 सब क्लॉज 8 पढ़े, सेक्शन 10 सब क्लॉज 8 भी पढ़े, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया
नॉट इंक्लूडिंग डीम टू एक्रूज इंडिया। व्हाट आई वांट टू से कि सर ऐसे केस के अंदर अगर आप ये प्रूव कर दोगे ये इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो इसका मतलब चाहे वो रेंटल इनकम है, आप एक बार को बोल सकते हो कि सर ये 15 लाख भी नहीं आएगी। मैं क्यों आपको सर, बिकॉज सर जो लिखा है उसे पढ़ना, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। जब आपने सेक्शन 10(8)A में 10(8)B में ये बात लिख दी थी, तो आपको यहाँ पे लिखने में क्या दिक्कत थी सर? जब आपने नहीं लिखी तो आपको इसका मतलब है ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है जो इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उसको आपको हटाना ही है। आपका मेरा मतलब ये है सर इसका। I try to clear जो रचित भैया ने बोला मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। विद दिस आई थिंक आई कैन गिव माय क्लोजिंग रिमार्क्स नितिन जी। हाँ भाई, किसी क्वेश्चन हो तो एनीबडी हु कैन आस्क क्वेश्चन। व्हाट्सएप, यू आर आल्सो देयर। व्हाट्सएप को पूछना चाहते हैं एनीबडी? I invite any open debate questions. I am willing to consider them for opinion as well. And my humble regards and gratitude to Nitin ji for offering me this opportunity and giving me time to share my humble little knowledge. The pleasure is all ours भाई, pleasure is all ours। Really मैं कह रहा हूँ ये 24 मैंने सच में नहीं देखा होगा। Forgive me if I share. मेरा तो सबको 20 से 25 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा आप एक ये आर्टिकल 24 पढ़ने के बाद, मिनिमम कर रहा हूँ आपको। तो सबको 25, आप जो 40 बंदे हैं, 40-45 बंदे हैं, 45 into 25,000 रुपए, अब ला लो कितना फायदा करा दिया सबका आपने। 25 नहीं सर, करोड़ों हजारों में फायदा करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच लगाता हूँ। अगर हमारे एक सेमिनार से एक बंदा 25,000 रुपए कमा ले तो क्या बुराई है भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Anyhow, any question to Rachit on this section 6(1) amendment? कोई भी चीज पूछनी हो, you can ask him, you can raise your hand। वैसे stop sharing कर ले बेटे भाई, stop sharing कर ले। हाँ जी, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, they can put in Q&A या फिर वो hand raise कर सकता है। You can ask directly to Rachit without Rachit is not going to charge any fees for that। आज और 15 मिनट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। आप बड़े भैया, आपसे वैसे ही नहीं फीस ले सकते हैं। अरे मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ लोग क्वेश्चन पूछ ले मुझसे। यार क्वेरी है, प्लीज शेयर द पीपीटी। आई विल शेयर द पीपीटी विद एवरीवन। मैं नितिन जी को सेंड कर दूंगा, नितिन जी कैन शेयर। और इफ यू वांट आई कैन शेयर। क्वेश्चन है, सुमानी जी ने पूछ लिया था आपसे भैया, सुमानी जी का क्वेश्चन मैंने लिया था भैया। कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना हो, एनीबॉडी वांट टू आस्क? गॉड साहब, यू आर देयर? यस यस, आई एम हियर। तो रचित जी, बहुत बढ़िया ढंग से आप कर रहे थे। सॉरी आई फॉर बीइंग लेट। दैट्स ओके गॉड साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा, आपने तो प्रेजेंटेशन मैंने जितनी देखी बहुत बढ़िया बनाई है। बस सर, आजकल बेनिफिट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऑफ कोविड, एवरीवन इज हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर ऑल दिस। और ये बात आपने एक और अच्छी जो RNOR जो आगे आप पोजीशन डिस्कस कर रहे थे, जब मैं पहुंचा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस ढंग से आपने प्रेजेंट की बहुत बढ़िया है। और लोगों की जो क्वेरी है कि आपने 2 पॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है R वाले 729 और 9 out of 10, बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए। मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। You have done a wonderful job, I would say। आप लोगों का प्यार है सर, ये तो देखने जोहरी, नितिन भैया कहते हैं जोहरी को हीरे की पहचान होती है। मैं हीरा तो नहीं हूँ, पर नितिन भैया ने अपने आप को जोहरी बना लिया। नहीं, उन्होंने तो जोहरी बना लिया, लेकिन वो हीरे भी पैदा करते जाए कि वही हम रगड़ेंगे वहीं जहाँ पे हीरा होगा। रचित सर, सच अ गॉड साहब आप लेट आए। रचित एक्चुअली वेरी वंडरफुल स्पीकर ऑन डायरेक्टिक्स। तो आस्क हिम किया तो सेक्शन 6 के नो ट्राई करता, तो ही इज आल्सो स्पोकन ऑन एट लेंथ। तो दो तीन चीजें आपके आने से पहले इसने 2-3 चीजें बहुत अच्छी बताई। वन इज आर्टिकल 24 जो मुझे भी ध्यान नहीं था। अच्छा। सिंगापुर और हांगकांग के लिए, जहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मान लीजिए रेजिडेंट बन जाते हो किसी उसका, तो अगर वहां से म्यूचुअल फंड से कोई इनकम आती है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स। तो इसलिए इसने इशू भी बताया कि नितिन भैया कभी आपने क्रॉस चेक किया कि व्हाई इंडियन मार्केट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग? सारा का सारा मनी फ्लो हो रहा है यूएई से, सिंगापुर से और हांगकांग, और वहां के लोग रेजिडेंट वाले यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। और क्योंकि वहां के म्यूचुअल फंड के या फिर जो भी शेयर्स के जो पैसे हैं आपके हाथ, उनके हाथ इंडिया में टैक्स नहीं हो रहे 24 यूज करते हुए, और वो टैक्सेशन यूएई में तो टैक्स है ही नहीं, आपको पता ही है सर, दुबई में। तो बस इसलिए मार्केट बूम कर रही है, चाहे कुछ काम कोई हो रहा नहीं हो रहा, पर मार्केट बूम कर रही है। अच्छी बात हमारी है, अगर हमने इसको अप्रैल में बुला लिया होता और भूल चुका होता तो कुछ पैसे हमने भी कमा लिए होते, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ऑल टाइम लो पे थी। नहीं, अभी भी एक मौका मिलेगा, आई बिलीव थोड़े दिनों में मार्केट फिर से मौका देगी। बता देना, आप हमें टिंकल मार देना। हाँ भाई, जब मौका लगे तो आप जरूर बताओ।
हाँ बिल्कुल सर, शेयर करेंगे सबसे नॉलेज, इसी बात में नॉलेज शेयर करके ही सबसे प्यार भी मिलेगा, और नॉलेज शेयर करके नॉलेज हमारी भी बढ़ेगी आपस में। एकदम ठीक नहीं है। नहीं, ये तो शेयर करने के लिए ही है, ये तो फंडामेंटल हमारी हमारी नॉलेज का फंडा ही यही है, शेयर करते चलो जितनी जहां भी मौका लगे। और ये सर देखिए, मैंने ना भैया बड़े लोगों से और गौर साहब से ये सीखा है। और यहाँ पे क्या होता है, एग्री टू डिसएग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया, गौर साहब ने बोला करेक्ट कर दिया, तो इट्स नॉट बैड इधर। जैसे तूने 24 बताया, बहुत अच्छा हो गया। तो दैट्स वे आप जब नॉलेज शेयर करते हो तो 4 चीजें मिलती है, 4 चीजें देते हो, 4 चीजें मिलती है। तो इसमें एग्री। बात नहीं होनी चाहिए। तो नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर कोई बंदा सोचे मैं परफेक्ट हूँ तो सॉरी, मतलब वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण कोई नहीं हो सकता, सीधी बात है। भगवान बिल्कुल बिल्कुल सकता। बिल्कुल, एग्री सर, तो एग्री। एवरीबडी, और आप जैसे नई नई चीजें पढ़ते हो, आप जैसे आर्टिकल 24, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे को सच में अच्छा लगा यार, मैंने ये बात सोची नहीं कभी भी। तो आर्टिकल 24 पढ़ के तो बहुत ज्यादा फायदा लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मिल सकता है तो सर, बहुत बड़ी टैक्स बात है, प्लानिंग कैन बहुत बी बड़ी डन। बात है सर, यू आर राइट। सर एनीबडी who want to ask any question to Rachit, or otherwise we'll call it a day. तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो गौर साहब एक बार याद। पूरी सीरीज का एक बार थैंक यू भी बोल दीजिएगा। पूरी सीरीज में बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल स्पीकर्स आए हैं, बिल्कुल। करीबन 10-11 दिन चली है, और रचित वाज द लास्ट। अब नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे दोबारा शुरू करेंगे आफ्टर द 31st। तो इट्स अ वंडरफुल सीरीज टू बी वेरी फ्रैंक। मैं तो आपको, हम डर रहे थे, मैं और गौर साहब शुरू करें नहीं करें, क्योंकि हम ऑलरेडी थक गए थे। और प्रॉब्लम 4 से 6 में दिक्कत ये आती थी कि टाइम पीरियड के अंदर द पीपल नॉर्मली, हमारे खुद के सेमिनार होते थे, क्लाइंट का आने का टाइम होता था। तो मैंने गौर साहब से डिस्कस किया, रचित भैया, तो कि सर हम 2 बजे शुरू करते हैं, लेट इट बी, मैक्सिमम यही, लंच नहीं मिलेगा थोड़ी देर, तो बिल्कुल। क्या करेंगे, प्रॉपर टाइम पे कर लिया करेंगे, देखी जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो गौर साहब एग्रीड टू इट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। टू बी फ्रैंक, मुझे ये टाइम 2 से 3:30 का टीम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बाकी लोगों को। गौर साहब, ओवर टू यू। ओके, so this is a wonderful session, Rachit ji. You have explained in a very very lucid manner, और उतना पोर्शन, और जब मैंने भी आर्टिकल 24 की बात सुनी, कर्सरी तो मैंने भी पढ़ लिया, मालूम भी था, बट इस एंगल से बिल्कुल नहीं सोचा था। और स्पेशली यू व्हाट यू हैव टोल्ड कि हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट। एक्चुअली किसी सेक्शन की नॉलेज होना, किसी आर्टिकल की नॉलेज होना, इट इज वन पार्ट, एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फाइनेंशियल मार्केट और एनी अदर फैक्टर, दैट इज that is the key test, how you interpret the subject or the particular provision of law. So it's a wonderful thing. And रसिद जी, एक बात आपको बताएं कि ये हम लोग इस सीरीज को हम आज समापन आपके साथ कर रहे हैं, तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर with us, and this section has made a tremendous change, and इसके far reaching implications हैं जो आपने शायद हिट किया है। मैंने भी 2 जगह यही बोला है कि सब इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी मुझे लगता है, बिल्कुल, मैं लेकिन मानता हूँ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट्स किसी टाइम ज्यादा हो जाए, लेकिन किसी टाइम कम भी हो सकते हैं। सर डेफिशिट एक मिनट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। रतिका, गौर साहब सॉरी, आई एम जी इंटरप्टिंग जी, यू। यस। रतिका हियर वांट टू से समथिंग। रतिका जी हाँ जी। बोलिए। रतिका जी अनम्यूट की, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए प्लीज। रतिका मैम, रतिका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर इनका क्वेश्चन जो आया है मैं बताता हूँ सर, इट्स अ लिटिल ऑफ टॉपिक बट जस्ट वांटेड टू आस्क इंटरप्ले बिटवीन DAA and MLI, especially in the light of Article 24. मैम yes, what you said is very much correct. भैया MLI मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ये। मैम ये जी हम आज जो हमारा टॉपिक था, सी MLI itself is a big topic. MLI समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि MLI किस किस पे लग रहा है, इंडिया की कौन से आर्टिकल को हिट कर रहा है, कौन से आर्टिकल को हिट नहीं कर रहा। बट इफ यू से अबाउट PPT टेस्ट, यस, पर जहां पे अगर कोई व्यक्ति दुबई में ही रह रहा है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जहां पे व्यक्ति कोई दुबई में रह रहा है, तो वहां पे PPT टेस्ट को दिक्कत आएगी नहीं। और मैं तो मैम PPT टेस्ट नॉर्मली इंडिविजुअल को तब हिट करेगा जब आप बेसिकली फॉर द बेनिफिट जा रहे हैं। आप ट्राई टू अप्रिशिएट, जैसे आप साइप्रस से आपने रेजिडेंटशिप परचेज कर ली, राइट, तो मतलब यहाँ पे डीमिंग रेजिडेंटशिप तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब वो काम खत्म हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, जो आप रतिका जी MLI वाली बात कर रहे हैं, PPT टेस्ट में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैं दुबई का रेजिडेंट हूं, मैं सिंगापुर का रेजिडेंट हूं, या हांगकांग का रेजिडेंट हूं, और मैं अपने पैसे इंडिया में लगा रहा हूं, इसमें PPT टेस्ट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ट्राई टू अप्रिशिएट, वहां पे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और
यस, अगर आप ये बोल सकते हो कि आर्टिकल 24 में कोई अमेंडमेंट हुई है एज टू दैट, जो मुझे समझ में आ रहा है आर्टिकल, यस, एक पॉइंट हो सकता है जो आपका पॉइंट हो सकता है बड़े भैया, जो रचित है, ये मैडम बोल रही है वो पॉइंट सही है। पहली बात बता दूं मैडम, हांगकांग हैज नॉट साइंड पीपीटी, एमएलआई इज नॉट साइंड। एक बात, सिंगापुर के साथ साइंड है, आपकी बात पॉइंट सही है। यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, मुझे याद आ गया, आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं भैया रचित भैया, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट शी वांट टू से सिंगापुर के कंटेक्स्ट में एमएलआई के केस में वहां पे वो बोलता है, अब जो पीरियड है वो बोल रहा है कम से कम आपको 365 दिन होल्ड करना पड़ेगा प्राइर टू ब्रीच, अगर डीडीडब्ल्यूए का बेनिफिट उठाना है तो। एमएलआई के अंदर सर आपको, इंडिया सिंगापुर की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया यूएई की बात कर रहा हूं, हांगकांग में नहीं हो पाएगा क्योंकि हांगकांग के साथ आपने एमएलआई साइन नहीं किया, एमएलआई इज नॉट साइन। तो उस केस में यस देयर कुड बी इंपैक्ट एज टू, जो आप बोल रहे हो रतिका जी एकदम करेक्ट कह रहे हो कि भैया आर्टिकल 8 वो पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 8 में भी होल्डिंग पीरियड दे दिया है, अब होल्डिंग पीरियड के अंदर अगर आपको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट उठाना है तो के हिसाब से आपको वो पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। दैट इज, रतिका जी यही कहना चाहते हैं आप या कुछ और कहना चाहते थे? आई थिंक रितिका जी सर आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया पॉइंट आपका। शी इज स्पेशली इन लाइट ऑफ आर्टिकल 24, आई थिंक शी इज सेम थिंग शी वांट्स टू आस्क। शी इज नॉट एबल टू स्पीक, आई प्रॉब्ली शी इज कमेंटिंग ऑन द मैसेज। तो एनी हाउ मैं भी सर गौर साहब आपको इस माध्यम से अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मैं आपकी सीरीज का पार्ट बन सका, आपने सौभाग्य मुझे नहीं, और हमारा सौभाग्य ये है कि हम इस सीरीज को कंक्लूड कर रहे हैं with your topic, with your suggestion, valuable आई विश कि आप ऐसी कई सारी सीरीज और करें। जी जी। So I want to thank you very much for being with us. And in the concluding session, I want to thank all the participants who have spared their valuable time throughout the period of this series. I thank you very much for being with us. Thank you Nitin bhaiya. Thank you भैया, thank you Thanks भैया, a lot. Thanks a lot for being with us. thank you भाई, thank you And see you Rachit ji in our next series as a upcoming series, yes, upcoming series, पक्का सर, thank you भाई, thank you भाई, thank you भाई, thank you भाई।